अगर हम पहले आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है? Isochoric. Volume should be constant. It's a thermodynamical process in which volume remains constant. So delta V is 0. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन विल बी 0. किसी भी चीज को आप क्लोज्ड कंटेनर में हीट करते हो, गैस इज हीटेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर, सो वी से दैट इट्स एन आइसोकोरिक प्रोसेस बिकॉज वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग. ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी लाइक volume remains constant. So you can say state changes from A to B. This point where you can say pressure is P1 and volume is V1. Pressure is P2, volume is still V1. So इस केस में area under the graph 0 है, area under the graph 0 है, so work done will be 0. So we say PV diagram is straight line parallel to pressure axis. Straight line area under the graph is 0, so work done 0. Example, you can say heating a gas in a closed container. So this is isochoric. Isobaric process कौन सा होता है? Pressure constant. Example. So you can see heating a system in an open container because pressure remains equal to atmospheric pressure. So isobaric process को हम लेंगे कि thermodynamic process in which pressure is constant. Heating a liquid in open container. ग्राफिकली अगर हम देखें इस केस में वर्क डन होगा isobaric प्रोसेस में. वर्क डन graph will be pressure is constant, volume can change. So you can say volume changes from V1 to V2. Pressure remains constant P. So point A is pressure is P1, volume is V1. Pressure is P1, volume is V2.
area under the graph is work done. So PV curve is straight line parallel to volume axis. And work done is area under the graph. Work done is equals to P into V2 minus V1. एक्सपेंशन है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, कंप्रेशन है तो वर्क डन नेगेटिव होगा. एक्सपेंशन में वर्क डन ऑन द गैस पॉजिटिव या वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव? बाय द गैस. सो एक्सपेंशन में भी से वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव. और कंप्रेशन में वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव. ठीक है, दोनों प्रोसेसेस. इसमें कोई डाउट है तो देख लो. आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक. नेक्स्ट दिन हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Law of conservation of energy, and mathematically say whenever heat is added to the system, it transfers to some other form of energy. Some other form of energy, इस केस में हम ले लेंगे, it will be equals to कि अगर हमने heat energy supply किया dq gets converted into change in internal energy plus some work is done. So mathematically हम लिखते हैं कि dq is equals to dq represents energy exchanged, can be added or removed. Heat energy exchanged. du is change in internal energy. And dw is work done. बिकॉज केमिस्ट्री में थोड़ी डिफरेंट इक्वेशन लिखते हैं तो इसलिए साइन कन्वेंशन लिखनी जरूरी है. dq एंड du की तो सेम है. dq positive if heat is added to the system. If heat is added to the system, and negative if heat is removed from the system. Work done is positive if gas expands, dw is positive, and this is work done by the gas. dw is negative in compression. This chemistry में work done on the gas लेते हैं, तो यहाँ पे dw जो है is work done by the gas. What about du? du positive कब होगा, negative कब होगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा गैस का तो du इज पॉजिटिव. नॉर्मली गैसेस के लिए करेंगे. टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस, एंड नेगेटिव टेम्परेचर इंक्रीजेस.
अब इस लॉ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, du is equals to dq minus dw. इसमें dq और dw स्टेट फंक्शन है या नॉन स्टेट फंक्शंस हैं? मींस पाथ पे डिपेंड करते हैं कि वर्क डन और जो चेंज हीट एनर्जी सप्लाइड है, दैट डिपेंड्स कि कितना हीट एनर्जी चेंज आया है, कितना वर्क डन है, दैट डिपेंड्स कि पाथ कौन सा, हम किस पाथ से मूव किए हैं। कि अगर हम ए से भी डिफरेंट पाथ यूज करेंगे आने के लिए, थर्मोडायनामिक स्टेट ए से थर्मोडायनामिक स्टेट बी पे जा रहे हैं, तो वर्क डन कितना होगा ये डिपेंड करेगा। वो हम आइसोबैरिकली गए हैं, हम आइसोथर्मली गए हैं, एडियाबैटिकली गए हैं, कौन सा प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो हम उसको क्या बोलते थे, आइसोट्रॉपिक। तो हम किस प्रोसेस के थ्रू गए हैं, वर्क डन और हीट एनर्जी उस पर डिपेंड करते हैं। तो इनका जो डिफरेंस है डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू, दिस इज डी यू जो है ये स्टेट फंक्शन है। अगर हम जहां से शुरू है उसी स्टेट पे वापस आ गए तो डी यू विल बी 0. So we say du depends on state. On state of system. Whereas dq and dw depends on path followed. Change the state of system. The first law of thermodynamics जो है गैसेस के लिए है, सॉलिड्स और लिक्विड्स पे भी अप्लाई हो सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इज इट एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस एंड सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों पे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, we say it's equally applicable to all three states. Normally 11 में gases के लिए यूज करते हैं, but it's applicable to all three states. There is solid, liquid and gases. It's basically energy conservation law. And इसका ये बेसिकली डिफाइन क्या कर रहा है, इट्स रिलेशन बिटवीन द हीट एनर्जी सप्लाइड एंड द वर्क डन। सो हमने नॉर्मली लिया था कि ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने कौन सा कंसेप्ट डिफाइन किया था। ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। सो इसे ज़ेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अगर पूछा जाए किसको डिफाइन करते हैं, डिफाइंस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि डी यू, क्योंकि इसको लिखने का हम नॉर्मली ये कंसेप्ट यूज करते हैं। सो डी यू इज डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। सो दिस इज ज़ेरोथ लॉ डिफाइंस टेम्परेचर, is used to define temperature, and first law is used to define internal energy. डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करें, स्टार्ट विद एडियाबैटिक। फर्स्ट लॉ फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा था? इन एडियाबैटिक प्रोसेस dq is 0. No heat energy exchanged. Implies du plus
means du is फिजिकली ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? du is equals to minus dw. अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा. नेगेटिव इंटरनल एनर्जी चेंज का मतलब वर्क डन पॉजिटिव कब होता है? एक्सपेंशन में, कंप्रेशन में? एक्सपेंशन में dw पॉजिटिव है तो du नेगेटिव है. du नेगेटिव मतलब टेम्परेचर फॉल करेगा. कंप्रेशन में dw नेगेटिव हो जाएगा तो du पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब टेम्परेचर राइज करेगा. सो वी से इन एक्सपेंशन dw is positive, du is negative implies जो हम कहते थे कि adiabatic expansion results in cooling. Adiabatic expansion results in cooling क्योंकि टेम्परेचर फॉल कर रहा है. कंप्रेशन में dw is negative implies temperature increases. So you can say adiabatic expansion results in cooling. Adiabatic compression results in increasing the temperature. ठीक है. स्टेप अगर हम यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए लिखें, if gas is heated isothermally, तो du is 0. Implies dq is equal to dw. This implies that whatever work is done, that gets converted into whatever heat energy is supplied, that gets converted into work. Whatever heat energy is exchanged is converted to work. अगर हम साइक्लिक प्रोसेस लें, साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है? Where the system returns to its initial state after a series of changes. कि जहाँ से सिस्टम शुरू है उसी स्टेट में जब वापस आ गया. सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर नंबर ऑफ चेंजेस. अगर सिस्टम उसी स्टेट में आ गया तो du is 0. du 0 है तो it will again results in जैसे मैंने साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ किया. सिस्टम A से B गया थ्रू पाथ AEB and it returns to ACB. इस केस में वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन होगा या नहीं होगा? बिकॉज A to B वर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? A to B पॉजिटिव है एंड B to C B to A नेगेटिव है. बिकॉज A to B एक्सपेंशन है तो वर्क डन ही हो जाएगा ये पूरा.
अगर मैं पूछूं बी से सी ए वर्क डन कितना है तो ये नीचे वाला एरिया, तो इन दोनों का डिफरेंस कौन सा बना? एरिया enclosed. So we say in cyclic process area enclosed is the work done, and this is also equals to heat energy exchanged. अब ये क्लॉकवाइज प्रोसेस है एंटी क्लॉकवाइज, ए टू बी एंड बी टू सी, बी टू ए, क्लॉकवाइज चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। नेटवर्क डन पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक्सपेंशन में वर्क डन ज्यादा है कंप्रेशन में? एक्सपेंशन में, तो नेटवर्क डन पॉजिटिव है। कभी भी साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज होगा तो नेटवर्क डन विल बी पॉजिटिव, अगर प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन विल बी नेगेटिव। एंड आल्सो हीट एनर्जी एक्सचेंज्ड। We say that if cyclic process is clockwise, network done is positive, नेटवर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है यहाँ तक? दो प्रोसेसेस और करना है हमने इसमें, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग प्रोसेस दोनों में स्टेट चेंज हो रही है, तो दोनों में एक मेजर डिफरेंस है। मेल्टिंग प्रोसेस इज व्हेन स्टेट चेंजेस फ्रॉम मेल्टिंग प्रोसेस में सॉलिड टू लिक्विड। अगर सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज होती है तो वॉल्यूम में चेंज आता है? और लिक्विड टू गैस बॉइलिंग। सो नॉर्मली अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर मेरे पास एक से ग्लास टम्बलर है, उसमें पानी है, मैंने उसको बॉईल कर दिया, तो स्टीम का वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? जो स्टीम बनी पूरे रूम को भर देगी। जैसे जिम में स्टीम रूम है तो उसमें जो स्टीम है वो पूरे रूम को भर रही है। पानी पूरे रूम के जितना नहीं था, पानी तो थोड़ा सा ही था जिसको स्टीम में चेंज किया, बस स्टीम पूरे रूम में भर गई। मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज वेरी लार्ज। मेरे साथ इसको दूसरे वे में सोचो, मेरे पास एक से ग्लास टम्बलर है जो फ्रीज किया हुआ है, तो उसका जो पानी बनेगा वो ऐसा होगा कि एक ग्लास पानी फ्रीज किया था, जब मेल्ट किया तो वो 2 ग्लास बन गए। होगा ऐसे? आपने रेफ्रिजरेटर में एक ट्रे के अंदर पानी रखा, तो जब वो फ्रीज कर जाएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या ऑलमोस्ट उतना ही रहता है? मैंने क्या पूछा, बढ़ेगा, कम होगा या ऑलमोस्ट उतना ही रहेगा? ऑलमोस्ट सेम रहता है। Whenever solid changes to liquid, the change in volume is negligibly small. आपके पास एक आयरन का ब्लॉक है, उसको हीट करके मेल्ट कर दो, तो जो सॉलिड का वॉल्यूम है लिक्विड का भी ऑलमोस्ट उतना ही होता है। तो इससे पता क्या चलता है, जब सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन होगी तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? पी डेल्टा वी। बिकॉज वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहा तो वर्क डन इज 0। इसका मतलब मैंने जो हीट एनर्जी सप्लाई की, स्टेट चेंज करने के लिए कितनी हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है? ml, L इज लेटेंट हीट। तो मैंने हीट किया और उसको सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, हीट एनर्जी सप्लाई किया ml, dq इज ml, वर्क डन 0 है, तो du कितना हो जाएगा? du इज dq माइनस dw, dw 0 है, तो du will be equals to dq only. So we say melting process और boiling process में हम यही फर्क लेते हैं। We say when solid changes to liquid,
change in volume is assumed to be zero because negligible होता है. Implies heat energy supplied to change the state. We say dq is equals to ml from first law of thermodynamics. Or du is equals to melting process isothermal है या नहीं है? Melting process. It's an isothermal. Isothermal process है, इसका मतलब temperature constant है. Temperature constant है but internal energy फिर भी change कर रही है because state change हो रही है. यही कल बताया था कि अगर state change ना हो तो temperature constant है तो हम change in internal energy भी zero लेते हैं. बट अगर स्टेट चेंज हो रही है तो देन यू कैन से कि अगर स्टेट चेंज हुई है तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी. बॉइलिंग में हम लेते हैं स्टेट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस. There is large change in volume. तो work done जो होगा that can be written as P into V2 minus V1. Heat energy supplied to change state is again ml. L will in this case latent heat of vaporization. First law du is equals to, or you can say change in internal energy in boiling processes कि melting में whole of the heat energy supplied changes internal energy but boiling में part of heat energy supplied is used to change the internal energy. Clear है यहाँ तक? Next is relation between principal specific heats, CPCV. CP and CV के बीच में हमने रिलेशन निकालना है. हम इसमें लेते हैं कंसिडर 1 मोल ऑफ अ गैस. CPCV पता है CP is specific heat at molar specific heat at constant pressure and CV is molar specific heat at constant volume. So consider 1 mole of a gas which is heated at constant volume to change temperature by dt. तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी? एनर्जी रिक्वायर्ड is a number of moles into molar specific heat into change in temperature. ये dq की वैल्यू है या du की वैल्यू है? du. अगर
हमारा प्रोसेस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो dW जीरो, dW जीरो है इन आइसोकोरिक प्रोसेस, तो यही du भी होगा इन आइसोकोरिक प्रोसेस. dV is equals to 0 implies from first law du is equals to, or you can say du is equals to cv dt. ठीक है ये स्टेप. अब अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पे हीट करता हूँ, तो वर्क डन होगा. अब वर्क डन होगा तो dW is equals to PdV. Heat energy supplied, energy required to increase temperature at constant pressure. We say dq dash is equals to first law of thermodynamics. क्या है? First law is dq dash is cp dt. अब इंटरनल एनर्जी चेंज इस पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे स्टेट चेंज की. इट डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू. तो अगर हम टेम्परेचर dt चेंज कर रहे हैं, हम आइसोकोरिकली चेंज करते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी cv dt. हम आइसोबैरिकली चेंज करेंगे तो भी du तो यही रहेगा, बिकॉज du डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोसेस. सो अगर हमने टेम्परेचर dt चेंज किया है, अगर हम कह रहे हैं आइसोकोरिकली चेंज करने से चेंज इन इंटरनल एनर्जी cv dt है, तो एडियाबैटिकली चेंज करने से भी cv dt होगा, आइसोबैरिकली चेंज करने में भी cv dt होगा, बिकॉज du डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रोसेस. तो वी कैन से दैट एज चेंज इन इंटरनल एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोसेस, does not depend on nature of process. So du dash will be equals to, ये स्टेप आया समझ या नहीं आया? अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं तो cp dt du dash की जगह पुट कर दो cv dt and pdv can be written as rdd. 1 मोल के लिए ले रहे हैं, बिकॉज 1 मोल के लिए यही इक्वेशन बनेगी ना, pv is equal to rt. तो you can say cp is equals to that means difference in molar specific heat does not depend on molar mass. कोई भी गैस हो cp minus cv यही आएगा, and this is true if, ये कौन से सिस्टम्स के लिए ट्रू होता है? तो गैसेस which expands on heating, because अगर वर्क डन पॉजिटिव, अगर वर्क डन नेगेटिव होता है, वर्क डन होता ही ना, क्योंकि ऐसा प्रोसेस, बिकॉज फर्स्ट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. ऑल गैसेस के लिए cp minus cv is r, बट अगर कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो उसमें cp minus cv नेगेटिव में भी आ सकता है. बट दिस बेसिकली implies that change in specific principal specificity, a difference in principal specificity does not depend on molar mass. Difference in molar specific heats
does not depend on अच्छा मोलर स्पेसिफिक हीट ना होती है, अगर स्पेसिफिक हीट होती तो उसका डिफरेंस डिपेंड करता है मोलर मास पे. Cp can be written as इसको ऐसे लिख सकता हूँ. इसमें Cp स्मॉल Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर. And Cv is specific heat at constant volume. कैपिटल Cp क्या था? मोलर स्पेसिफिक हीट. तो इन दोनों में रिलेशन क्या बनेगा? स्पेसिफिक हीट होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. तो अगर जैसे मैं ऑक्सीजन का मोलर मास लेता हूँ m, तो 1 ग्राम के लिए अगर एनर्जी रिक्वायर्ड है स्मॉल Cp, m ग्राम के लिए हो जाएगी कैपिटल M इंटू Cp. तो यू कैन से प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स का जो डिफरेंस आएगा दैट डिपेंड्स ऑन मोलर मास. फर्क समझ आया दोनों में, कैपिटल Cp और स्मॉल Cp में? कैपिटल Cp जो है वो मोलर स्पेसिफिक हीट है, मतलब अगर किसी चीज का मोलर मास m है, कैपिटल M, तो उसको एनर्जी कितनी चाहिए उसका टेम्परेचर चेंज करने के लिए? मास इनटू एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस. स्मॉल Cp जो है वो 1 ग्राम का टेम्परेचर चेंज करने के लिए है, और कैपिटल Cp m ग्राम का चेंज करने के लिए है, where m is मोलर मास. तो दोनों में यही रिलेशन बनेगा ना कि 1 ग्राम के लिए, ये तो मोलर मास के लिए लिखता है कि m ग्राम के लिए Cp माइनस Cv is R, तो 1 ग्राम के लिए लिखोगे तो ऐसे रिलेशन बनेगा. तो इससे Cp माइनस Cv ये दोनों में फर्क है. दिस इज नॉट मोलर स्पेसिफिक हीट. ये 1 ग्राम के लिए Cp Cv लिखा है, तो इसलिए कैपिटल Cp एंड स्मॉल Cp में डिफरेंस होता है. समझ में आया डिफरेंस दोनों में? यस. अगर Cv मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए निकालना है, Cv फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, कि बहुत सारी गैसेस हैं और हमने Cv फॉर मिक्सचर निकालना है. मेरे पास एक सिस्टम था जिसमें बहुत सारी गैसेस हैं, से या 2 गैसेस से कर दो. से फिर इफ अ मिक्सचर कंटेन्स 2 गैसेस, N1 moles of gas A with specific heat Cv1 at constant volume. Similarly, N2 moles of gas B with specific heat Cv2. मैंने अगर टेम्परेचर चेंज किया इस सिस्टम का, if temperature changes by dt, तो फर्स्ट गैस की इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आएगा? N1 इंटू Cv1 इंटू dt. सेकेंड गैस में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा? N2 इंटू Cv2 इंटू dt. तो मिक्सचर में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हो गया? मिक्सचर में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? मिक्सचर नंबर ऑफ मोल्स आर N1 प्लस N2. तो du जो आएगा दैट इज N1 प्लस N2 इंटू Cv dt. इसमें Cv फिर क्या हुआ? स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर मिक्सचर. Cv is molar specific heat at constant volume for mixture. Conservation of energy. Total change in internal energy यही होगा जो दोनों gases में है. So you can say N1 plus N2 into Cv dt. N1 Cv1 dt
plus N2 Cv2 dt, or you get that N1 plus N2 into Cv, N1 Cv1 plus N2 Cv2. तो मिक्सचर के लिए Cv कितना आ गया? अच्छा, मैं अगर इस इक्वेशन को देखूं, Cv can also be written as Cv R1 gamma minus 1. ये रिलेशन पता है कहाँ से आया? इसे Cp माइनस Cv इज R. पूरी इक्वेशन को अगर मैं Cv से डिवाइड कर दूं, Cp by Cv इज गामा, तो Cv कितना हो जाएगा? Cv becomes, तो मैंने वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो यू कैन से गामा फॉर मिक्सचर अगर आपको बताना है, ये रिलेशन बनेगा N1 plus N2 upon gamma minus 1 सिमिलरली अगर Cp फॉर मिक्सचर लिखना है वो भी ऐसे ही आ जाएगा. जैसे N1 Cp1 plus N2 Cp2 upon N1 plus N2. क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की दो लिमिटेशंस क्या होती हैं, क्या नहीं पता चलता है इससे? एक तो डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस. डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस मतलब कौन सा प्रोसेस थर्मोडायनामिकली पॉसिबल है, कौन सा नहीं. एग्जाम्पल के लिए ऐसे अगर वाटरफॉल है, पानी अगर नीचे गिरता है, तो वी से दैट द पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है. पर रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है कि अगर हम पानी का टेम्परेचर बढ़ाएं नीचे वाटरफॉल में तो पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता. So it does not tell us which of the processes are thermodynamically possible and which are not. Kinetic energy heat energy में change हो जाती है कि आपने ब्रेक मारी, भी से kinetic energy of vehicle gets converted into heat. पर साइकिल को गर्म करने से वो चलता नहीं है, so it means heat energy cannot be converted into kinetic. So first law of thermodynamics में हो सकता था ऐसे, मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Thermodynamically वो law of conservation of energy है कि kinetic energy heat में change हो रही है तो heat भी kinetic में change हो सकती है. But physically ये नहीं होता. So first law of thermodynamics does not tell the direction in which a process can take place and which cannot. और दूसरा it does not tell us the extent of change. Extent of change मतलब आपने heat energy supply की, अगर isothermal process है तो dq किसके equal होगा? अगर isothermal process है तो dq will be equals to dw. इसका मतलब जो हमने heat energy supply की सारा का सारा work done में change हो गया. बट हमने हीट इंजन्स में देखा है कि अगर हीट एनर्जी हम सप्लाई करते हैं वो सारा का सारा वर्क डन में चेंज नहीं हो सकता, बिकॉज यू कैन नॉट हैव अ हीट इंजन व्हिच इज 100% एफिशिएंट. थ्योरेटिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हिसाब से वो पॉसिबल है कि आपने हीट एनर्जी सप्लाई की, ऑल ऑफ द हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू वर्क, बट प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. सो इट डज नॉट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज कि कितनी हीट एनर्जी वर्क में चेंज हो सकती है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो सकती है. फर्स्ट लॉ में सब पॉसिबल था. dq इज इक्वल टू du, dq इज इक्वल टू dw डिपेंडिंग ऑन कौन सा प्रोसेस है. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट टेल्स अस व्हिच ऑफ द प्रोसेसेस आर पॉसिबल और नॉट, और डज नॉट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन इन व्हिच अ चेंज कैन टेक प्लेस. कि हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, वर्क मे नॉट बी कन्वर्टेड इनटू हीट ऑलवेज. सो इसको हम लेते हैं कि दिस इज द टू लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. इसमें देखो कुछ है पूछने वाला तो आज वाले में क्लियर है सारा? क्या क्या चीज? ये तो मैं पीडीएफ भेज देता हूँ अभी. मोलर स्पेसिफिक
स्पेसिफिक हीट का पूछना था कि वो कौन से स्टेट वेरिएबल्स पे डिपेंड करती है। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट हम किसी भी सब्सटेंस के लिए चेंज कर सकते हैं। चेंज कर सकते हैं मतलब कि डिपेंडिंग ऑन प्रोसेस। स्टेट वेरिएबल चेंज करें। हाँ मतलब जैसे हमने तो सिर्फ दो पढ़ी है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बट इनको छोड़ के कोई भी प्रोसेस हो तो उसको हम कह देते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर आइसोट्रोपिक प्रोसेस। तो और ये गैसेस में होता है, सॉलिड लिक्विड्स में हम नॉर्मली एक ही स्पेसिफिक हीट लेते हैं, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, बिकॉज उसमें वर्क डन नहीं हम नॉर्मली लेके चलते। तो सॉलिड्स और लिक्विड्स में हम सिर्फ सी लेते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। गैसेस में होता है कि डिपेंड्स ऑन चेंज, आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, कौन सा प्रोसेस है, तो उस अकॉर्डिंगली हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक नेक्स्ट टाइम करते हैं, फिर ये पढ़ के देख लो इतना।